हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा क्यू कार्ड सीरीज़ में नेक्स्ट क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अबाउट अ पर्सन यू थिंक हैज़ इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव आइडियाज़ और ओपिनियंस। सो आपको ये पूछा जा रहा है कि आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करनी है जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और नए नए आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने उस पर्सन को बताना है कौन है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आप उसको कैसे जानते हो और किस तरीके के आइडियाज़ उसके पास होते हैं। ठीक है, सो एक छोटी सी टिप कि हमेशा उसी इंसान का नाम लो जिसने आपको रियल लाइफ में कोई ना कोई एडवाइस दी हो। इस वे में आप कोई ना कोई इंसिडेंट जोड़ पाओगे अपनी क्यू कार्ड में, अपने क्यू कार्ड में, और आप अपने क्यू कार्ड को थोड़ा लेंथी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड काजल का नाम लिया है बिकॉज शी रियली गिव मी लॉट ऑफ एडवाइसेस। सो लेट्स सी। आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल इन माई डे टू डे लाइफ who has amazing ideas and wonderful opinions. But today I'm going to talk about my best friend Kajal. She's gorgeous and classy lady. She has sharp features. I know her from my earlier college days. Actually, we both enrolled in the same preparation classes for banking exams. So from there on, we are best friends. Whenever I get in any kind of trouble, I usually call her to get an idea that how to solve that problem. And interestingly, she always gave me the best ideas. She can think of any idea in a blink of an eye. What happened was I wanted to start my own business few months ago. So I shared it with her, and not only she gave me 7 8 business ideas, but she also provided me with a lot of knowledge about those business ideas. And moreover, she also suggested me to not to leave my job instantly. Instead of that, start some online business as a part time, and once it feels comfortable, then I can leave the job. And believe me, that idea works really well for me. So, according to my point of view, I'm really lucky to have such best friend who has very interesting thoughts and opinion. Moreover, she was trusted by my mother also because she is an honest person, and moreover, she understands everyone trouble. So I'm so happy and blessed to have such a friend who will always be by my side in every thick and thin. And I want to thank God because I'm really blessed to have a friend who has such a innovative thinking. Thank you. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस क्यू कार्ड। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने नॉर्मल अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन किया है और हम कहाँ मिले थे ये एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने इंसिडेंट ऐड ऑन किया है, एंड देन एट द एंड आई फेल द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द थिंग दैट आई हैव हर। सो सेम थिंग आप भी कर सकते हो। आप अपने मदर, फादर, ब्रदर, फ्रेंड, किसी के भी बारे में लिख सकते हो। So if you really want to write it down or you want to get your क्यू कार्ड checked, तो आप मुझे नीचे आ रही ईमेल आईडी पे अपने क्यू कार्ड्स भेज सकते हो। मैं उन्हें सुन के देन आई विल टेल यू हाउ इट वाज और आपके कितने के बैंड्स आ सकते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Bye bye, take care, and best of luck for your exam.